we are on properties of multiplication of integers. So first property, closure property. Okay, so in this closure property, take any number or any integer like 4 multiplied by 6 is equal to 24, correct? Or you can take minus 5 multiplied by 3, yes, is equal to 15, minus 15, yes. Or you can take minus 4 multiplied by minus 2, you will get plus 8. Okay, so here the multiplication of two integers, okay, multiplication of two integer gives a integer. Okay, so therefore this multiplication is now under the closure property. Okay, so if you are having a and b are integer and a multiply b gives integer, then we can say that this multiplication is closed under this closure property. Okay, so a into b gives integer, so that is a closure property. Second property, commutative property. So आपके पास अगर a multiply b है, so take any integer, let us say it is a 5 multiplied by 3. Okay, so 5 multiplied by 3 is equal to, yes, it is minus 15. Okay, now b into a, okay, b into a, that is reverse, 3 into minus 5, yes, you will get, yes, how much, again minus 15. therefore हम क्या कह सकते हैं, that is minus 5 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by minus 5. Okay, therefore these two terms or these two integer is having commutative property, that is a multiplied by b is equal to b multiplied by a. Okay, so in general for commutative property हम क्या लिख सकते हैं, a multiply by b is equal to b multiply by a. So you can reverse the order in the multiplication. So this is the commutative property. Okay, one more example. So let us say minus 10 multiplied by minus 5. So you will get 10 5s, yes, 15 multiplication is positive. Okay, and if you do, this is 5 minus 5 multiplied by minus 10, again you will get 50. therefore this is a multiply b is equal to b multiplied by a. So this is having commutative property. So this is the property of multiplication of integer. Okay, associative property, इसके लिए हमको मिनिमम 3 इंटीजर होना चाहिए. लेट अस हैविंग a, b एंड c, ये तीनों इंटीजर है. ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट b इंटू c. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c. ओके, अगर हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, ओके, a b c ब्रैकेट में था, यहाँ पे अगर a इंटू बी दैट इज मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c अगर ऐसा मिलता है तो दैट इज हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लेट अस से 2 मल्टीप्लाई बाय -4. ओके, दैट इज अ डबल ब्रैकेट हियर. तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो -5 multiply by, this is 2 4s are 8 and sign will be -8. okay, sign will be -8 is equal to 5 8s are, yes, 40 and sign is plus. Okay, minus minus plus. Similarly now this is 5, that is -5 multiply by 2 bracket into -4. okay, solve this. 5 2s are 10 -10 because negative integer multiply by positive integer multiply by -4. again it is a multiplication of two negative integers, so it is giving
positive 40. So this 40 is equal to 40. That means this is equal to same. So this is showing associative property. मतलब आप कि आप अगर तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तीन इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं ए बी या बी सी ये हिसाब से. ओके, जैसा डिपेंडिंग आपको सॉल्व करना है उस हिसाब से आपको इजी सम करने के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करना है. ओके, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अगर आपके पास ए इंटीजर है और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम. सो ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ए और 1 multiply by a is equal to a. So this is called multiplicative identity. यानी कोई भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है irrespective of their sign. ओके, साइन तो वही आएगा. So anything multiply by 1 is same number. Okay, for example 6 multiply by 1, yes it is 6, correct. Minus 8 multiply by 1 is equal to, yes it is minus 8, which is equal to 1 multiply by minus 8. Okay, so this is multiplicative identity. So if you're having this a multiply by 1 is equal to 1 multiply by a is equal to a, so this is a multiplicative identity. Okay, so either it is a positive integer or negative integer, multiply by 1 you will get same integer. Okay, multiplication by 0. अगर आपके पास a is any integer multiply by 0, so you will get 0. Okay, anything multiply by 0 is 0. Okay, so product of any integer with 0 is 0. So here 4 multiply by 0, yes 0. minus 10 multiply by 0, yes क्या आएगा? minus 10 multiply by 0, so it is 0. Okay, not minus 10. So 0 multiply by 8, so anything multiply by 0 is 0. So this is called multiplication of 0 with any integer. Okay, so your product is always 0. Okay, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हर बार 0 मिलेगा. So anything multiply by 0 is 0. This is important property. Distributive property of multiplication over addition. Okay, so let us consider आपके पास a multiply by b plus c ऐसा इक्वेशन है. ओके, तीन इंटीजर है और दिस b plus c is addition और ये multiply by a होता है. ओके, so ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. ओके, अगर ऐसा हमको ये सेम मिलता है देन वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, ये दोनों इक्वल होता है क्या चेक करना है. अगर ये इक्वल है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर दैट एडिशन. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. दिस इज 5 multiply by 6 into 3. yes, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने. सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास. ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पॉजिटिव साइन. ओके, 6 प्लस 3, yes 9. ओके, एंड आंसर इज 45. yes, तो इसका आंसर क्या हो गया? 45 है. Now a is 5 multiplied by 6 plus 5 multiplied by 3. So this is a, b and c. Okay. Now solve this according to board mass. So multiplication first and then addition. Okay. So 5 6 are, yes it is 30 plus as it is, and 5 3s are, yes 15, which is equal to 45. So you will get a multiply in bracket b plus c is nothing but a multiply by b, a addition
a मल्टीप्लाई बाय c। दैट इज आपको क्या करना है कि अगर कोई ब्रैकेट में है एडिशन और बाहर से कोई मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन एडिशन। यस, ओके। सो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। ओके, तो आपको क्या सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है a मल्टीप्लाई b। ओके, सो ये होगा a मल्टीप्लाई b, देन साइन क्या है bc के बीच में, पॉजिटिव है। ओके, तो ये a है, a से c को भी आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय c। ओके, सो a मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट b प्लस c इज नथिंग बट a मल्टीप्लाई बाय b plus a multiply by c. So this is called as a distributive property of multiplication over addition. Okay, और एक एग्जांपल देखते हैं। Okay, so a let us say it is a -3 multiply, यहाँ पे लिखते हैं हम this is 6 and this is plus 4. Okay, सो सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट, ओके, एंड देन मल्टीप्लीकेशन। सो -3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4, यस इट इज अ 10 इज इक्वल टू 10 3 30, साइन विल बी माइनस, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब यही हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज ए कितना हमारा -3 इंटू 6 प्लस इन ब्रैकेट क्या है -3 मल्टीप्लाई बाय यस कितना है 4। ओके, सो इज इक्वल टू, सो दिस इज -6, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 6, इट इज 6 3 18। ओके, 18 साइन कौन सा होगा, माइनस, एडिशन है लेकिन दिस प्लस माइनस माइनस साइन। ओके, और इसका मल्टीप्लीकेशन यस क्या होता है 4 3 यस 4 3 12। So here this is addition of two negative integer. Okay, so two negative integer में simply addition and give minus sign. Okay, minus 2 plus 8, yes it is 0, carry 1, so 1 plus 1 2 plus 1 3. Okay, so this is 30, so -30 is equal to -30. Okay, so you can do multiplication to the bracket solving or you can solve bracket first and आपको आंसर सेम मिलेगा। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, बट हम बीच में अभी लेंगे नेगेटिव नंबर। ओके, सो हियर 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लेंगे 3 माइनस 5। ओके, ठीक है, सो हमने देखा था दिस माइनस इज नथिंग बट इनवर्स एडिशन। ओके, तो सिंपली सॉल्व कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5, यस, सो दिस इज बिगर नंबर, सो यू हैव टू डू सब्सट्रैक्शन एंड गिव द बिगर इंटीजर साइन। ओके, 5 में से 3 माइनस 2 होता है लेकिन साइन किसका, बड़े नंबर का, इज इक्वल टू दिस इज 12। ओके, नाउ वी आर सॉल्व दिस। ओके, लाइक a 6 into 3। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 फिर से कॉमन आ जाएगा, दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो दिस इज सब्सट्रैक्शन। ओके, सो हियर यहाँ कितना आता है 6 3 18, करेक्ट, माइनस 6 5 30। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है 30 माइनस 18 और साइन देना है 30 का, तो साइन 30 का क्या है, माइनस, यस बिगर नंबर है, तो यहाँ पे 13 माइनस 18 इज 12 एंड साइन इज माइनस, क्योंकि आपका 30 इज अ बिगर इज गोइंग टू सब्सट्रैक्ट, या उसी का साइन है, या हम दूसरे टर्म में लिखते हैं 18 प्लस इन ब्रैकेट 30, तो 30 इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड उसका वैल्यू बड़ा होता है, 18 इज अ स्मॉलर इंटीजर। ओके, तो साइन आपको इसका देना पड़ेगा। ठीक है।